अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम किंगडम फंगई पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगई। बेटा आज भी हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगई। बेटा अब जो न्यूट्रिशन है फंगई की, फंगई आर हेटेरोट्रॉफिक। बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा है फंगई लैक क्लोरोफिल, फंगई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, thus they are heterotrophic. They are classified into following types on the basis of nutrition. On the basis of nutrition, the fungi can be classified. बेटा फंगई की जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट दे कैन बी क्लासिफाइड, फर्स्ट टाइप इज द पैरासाइट्स. They can be classified into parasites. What are parasites? As you know, those living organisms which derive their nutrition, which derive their food from other living organisms, that is hosts. Or the organisms which derive their nourishment from other living organisms, from the hosts, are called as parasites. According to Thrower in 1972, a parasite can be defined as an organism that lives with another organism in an intimate association. एक ऑर्गेनिज्म जो है इसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बहुत अच्छी रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशन है, बट फ्रॉम विच इट डिराइव्स इट्स ओन नरिशमेंट. लेकिन इससे क्या हासिल करता है, अपने लिए जो ग़िज़ा है उनका, वो ग़िज़ा हासिल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ. बट ये जो पैरासाइट्स है, दिस पैरासाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स. दैट इज obligate parasites or obligate saprophytes. बेटा ये obligate parasite किसको कहते हैं? Those parasites which live only on living hosts. वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही रह सकते हैं. तिम ऑर्गेनिज्म्स यम सिर्फ तो सिर्फ हेकन सर्वाइव करित, जिंदा रूजित कमन पे लिविंग ऑर्गेनिज्मन पे योत, तिमन छ वनन जिगरा obligate parasites. They are called as obligate parasites. यानी कि तिम parasites यम न लिविंग ऑर्गेनिज्मस बगैर बेई कंस ऑर्गेनिज्मस पे हेकन सर्वाइव करित किहिन, तिम न छ वनन obligate parasites. फॉर एग्जांपल पक्सीनिया. बेटा पक्सीनिया छ फंगई, ये छ obligate parasite. ये हेक न लिविंग ऑर्गेनिज्मस बगैर बेई कंस डेड ऑर्गेनिक मैटरस पे सर्वाइव करित के. बेटा Second one is the facultative parasites. Facultative parasites. These facultative saprophytes. Facultative saprophytes. But facultative saprophytes are those fungi which live on living hosts. Common pet rosen living host and pet. As when you obligate parasites which rosen living hosts. But at the time of emergency, in certain conditions, emergency के जिगरा living host छुन available किन, एम छु survive करुन, तेम साथ क्या करी, या सकर पनुन ग़िज़ा हासिल from dead and decaying organic matter. Those शाबाश fungi which live on living hosts, but at the time of emergency, during certain conditions, they obtain their food from dead and decaying matter also. तिम हेकन पनुन ग़िज़ा हासिल करित यम साथ इमरजेंसी आस, यम साथ न ग़िज़ा आस अवेलेबल किहिन, तिम साथ हेकन पनुन मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करित. When those organisms which are able to, those fungi which are able to change their mode of nutrition, change their mode of nutrition under emergency conditions, are called as facultative saprophytes. Facultative saprophytes. Phyta of thora used to lego, but yim ch fungi, yim ch facultative saprophytes. Obligate go which lives only on living hosts. Yim sirf to sirf can survive kari living host and pet. Obligate go yim living host and pet h rosen. Magar at the time of emergency, yim can pon mode of nutrition kari change, yim can adopt kari kya, tem sath saprophytic mode of nutrition can opt kari tem sath अडॉप्ट करित तम साथ तिमन छ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स. बट सेकंड कैटेगरी जो है वो है सैप्रोफाइट्स.
saprophytes are the organisms which obtain their nourishment, which obtain their food from dead and decaying organic matter. ठीक है, तम organisms यम पनुन ग़िज़ा आसन हासिल करन from dead and decaying organic matter, तम निच वन saprophytes. Saprophytes. बेटा यम saprophytes ती छ दोय किस्म, या छ obligate saprophytes, इत मोड ये वन obligate parasites. तम parasites यम सिर्फ तो सिर्फ हेकन कमन पे सर्वाइव करित लिविंग ऑर्गेनिज्मन पे. Obligate saprophytes क्या गई बन? Obligate चिगरा याद था उन. Obligate को only and only those fungi which derive their nutrition only and only from dead and decaying organic matter. यम dead and decaying organic matter पे योत आसन पनुन ग़िज़ा हेकन हासिल करित तिमन छ वनन obligate saprophytes. Example जिगरा म्यूकर विच फंगाई गो obligate saprophytes के तम organisms यम पनुन ग़िज़ा हेकन हासिल करित from dead and decaying organic matter, only and only from dead and decaying organic matter. ठीक है, दयम छ facultative. Facultative मतलब गो यम change आसन हेकन करित. गो यम ति छ saprophytes. Facultative क्या छ? यम छ saprophytes. These are the saprophytes, that is they obtain their food from dead and decaying organic matter. मगर at the time of emergency, during certain conditions, they change their mode of nutrition, that is they adopt another mode of nutrition. यम कहीं पर हासिल करन ग़िज़ा from dead and decaying organic matter. मगर facultative क्या गई वन? यम living this dead and decaying organic matter पे आसन हासिल करन ग़िज़ा, मगर at the time of emergency तिम हेकन कमी निश ते हासिल करित ग़िज़ा from living organisms. Living organism निश ते आसन हेकन हासिल करित. गो obligate थवन जिगरा याद यम सिर्फ ते सिर्फ obligate saprophytes सिर्फ ते सिर्फ हेकि dead and decaying organic matter पे हासिल करित. Facultative parasites यम हेकन यम छ कम पे हासिल करन dead and decaying organic matter पे हासिल करन ग़िज़ा, मगर at the time of emergency यम हेकन पनुन mode of nutrition change करित. Example fusarium. शाबाश. बेटा थर्ड टाइप है symbionts. Symbionts जिगरा ते पता symbiosis मजद्रोमुत. Symbiosis literally means living together. Living together. बेटा मगर यतिन छ इस concept symbiosis of mutualism असली. Those when the association where both the components are benefited, that is mutualistic associations must the fungi hekan exist gethit. But symbionts yim chi ikathe rozan, yim hasa chavan mutualism, live together. Ath man cha example jigra lichens. Lichens kya go? Lichens cha jigra topic ak padun, itan man by sirf definition. Lichens is a group of plants. It is a group of fungi association. It is an association between fungi and alga. The association between fungi and alga. Fungi the alga has darmiyan yes association chi, that is called as lichens. But fungi chi are chlorophyllous. They lack chlorophyll. Alga kya chi? Chlorophyllous. Alga kya kare? Photosynthesis. Empat kya karo beta? Fungi chi absorptive mode of nutrition. Absorb karan water. Go fungi kare absorb water. Alga ka nutrient this photosynthesis. Go alga di food kemis. Yel photosynthesis kare di fungus food. Fungi ke dia showed water. Both are benefited. Go yimchi hakan associations must de asit. It mutualistic don many fayda chasa. Ya mycorrhiza. But mycorrhiza go the association between fungi. Myces means fungi and rhizia means root and the roots of higher plants. The association between fungi and the roots of higher plants is called as mycorrhiza. यानी कि fungi बेच higher plant दरमियान association. Fungi क्या करे? Absorption of water and minerals. Rhizia क्या को? ये कमीज दी इधी roots. Root च और secrete करन food. सुची दिवान fungus. Both are benefited. Go. But ये fungi च तिम क्या है कि नौसित? They may be parasites. Obtain their food from other organisms. They may be saprophytes obtaining their food from dead and decaying organic matter, and symbionts they can live in association. But ब्याका character जो character है वो है the fungi may be eucarpic or holocarpic. Eucarpic or holocarpic. But eucarpic का च suppose this is a fungi. When a part of mycelium, बेटा आपको पता होगा mycelium, the mass of hyphae. बेटा ऐसे पढ़न
फंगई हसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आसन तिमन छ अस वनान हाइफे ये मास ऑफ हाइफे आस तथ वनान माइसीलियम गए यम मज अगर ये फंगई अगर यमु पार्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ फंगई पार्ट ऑफ माइसीलियम is used for vegetative propagation बेटा पार्ट ऑफ माइसीलियम गो इस्तेमाल कम खातर रिप्रोडक्शन खातर एम बनो नो ऑर्गेनिज्म नो फंगई दितुन यम साथ अख पार्ट आस इन्वॉल्व गसन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म माइसीलियम पार्ट आस गसन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम इट इज कॉल्ड एज शाबाश यूकार्पिक that is when a part of fungi when a part of mycelium is involved for the formation of new mycelium for the formation of new fungi it is called as eucarpic hollow when the whole or complete mycelium when the whole or complete mycelium is involved for the formation of new organism न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा होल माइसीलियम से इट दैट इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक व्हेन अ पार्ट ऑफ फंगी माइसीलियम इज इन्वॉल्वड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगी इट इज कॉल्ड यूकार्पिक व्हेन whole of the mycelium is involved for the formation of fungi it is called as holocarpic और बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है फंगई में इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन फिशन और बडिंग इट ऑकर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन फिशन और बडिंग ओके थैंक्स